Okay, assalamu alaikum everyone. Let's have a look at a few questions from this paper as well. So I'll be doing questions 3, 6, and 7 from this paper. I just had a quick look, and these are the 3 questions that look slightly more complicated. So let's do these 3 questions from the paper, 3, 6, and 7. Okay. If you have any questions, you can keep posting them in the chat box. Anything that you want to ask about, I'll keep answering to those questions at intervals as well. Okay, so let's start with this one. By the way, you can find all the other papers already solved in the yearly past papers playlist from 2021 to 2023. अगर आपको कोई भी question, कोई specific देखना है कहीं से, आप वहाँ से कहीं पर ढूंढ सकते हैं, ठीक है? But at this time, one particular video that I would really recommend would be quick revision video for M1. It's about a 1-hour video. उसको अगर आप 2x पे करेंगे, तो about 30 minutes में आप एक दफा पूरा सिलेबस गो थ्रू कर सकते हैं जस्ट टू रिफ्रेश एवरीथिंग कि क्या क्या चीजें आपने कवर कर ली हैं इस टाइम पे। वो सारी चीजें कंसोलिडेट करना इज रियली इंपॉर्टेंट। अगर आपने कहीं पे नोट्स अपने बनाए हुए हैं जहाँ पे हमें सारे फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, सारी चीजें एक जगह पे कहीं समराइज की हुई हैं, यू कैन हैव अ लुक एट दैट एज वेल। बट इस टाइम पे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करने से बेहतर एक्चुअली है कि आप एक दफा अपने नोट्स प्रॉपर्ली रिवाइज कर लें, ठीक है? आई एम जस्ट डूइंग दिस इन केस anyone wants to have a look at it later. अगर कोई specific question किसी को भी तंग कर रहा है तो वो आप उसमें से देख सकते हैं. But इस time पे it's going to be more efficient if you go through your notes as well. लेकिन आप question के साथ साथ तो आप यहाँ पे chart में post कर सकते हैं. Okay, let's look at this. Question number 3 from this paper. Let's have a look at this. It says a particle of mass 0.3 kg is held at rest by 2 inextensible strings. One string is attached at an angle of 60 degrees to the horizontal ceiling. The other string is attached at an angle alpha to a vertical wall. You can see there's a ceiling there and a vertical wall. The tension in the string is attached to the ceiling is 4 Newton. We need to find the tension in the string which is attached to the wall and find the value of alpha. Okay, so we have this particle. It's attached to 2 strings. इसके ऊपर कौन सी forces लग रही हैं? There's weight of the particle that's acting vertically downwards, which is 3 Newton. There's going to be tension. There's one tension that acts in this direction. उसने उसकी value दी हुई है. उसने कहा this tension is 4 Newton. All right, so you can write that here. This force is 4 Newton. And the other tension is what you have to find. Let's call this T. ये आपको नहीं पता इसकी value क्या है. ठीक है? Equilibrium है. तो आपने सिर्फ क्या करना है? इन forces को resolve करना है. Left वाली force right वाली force के equal, upward force downward force के equal. That's all that you have to do here. Okay?
अच्छा, ये हम यहाँ पे रिमूव कर देते हैं बिकॉज वी डोंट नीड दैट। हमने 3 न्यूटन ऑलरेडी यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लिया है। लेट्स रिजॉल्व द फोर्सेस फर्स्ट ऑफ ऑल। वी हैव दिस एंगल 60 डिग्रीज गिवन। इसका मतलब ये है कि जो ये वाला एंगल होगा यहाँ पे, दिस इज ऑल्सो 60 डिग्रीज। ओके, तो कंपोनेंट्स क्या बनेंगे 4 न्यूटन के? एक कंपोनेंट आपके पास लेफ्ट साइड पे होएगा which is going to be 4 cos 60. The component that is adjacent to the angle, उसके साथ cos लग रहा होता है। The component that's on the other side of the angle, यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा होगा? इस डायरेक्शन में you have 4 sin 60. Why is this angle 60? Because alternate angles, right? तो ये angle 60 आपके पास आ गया। So you have these two forces, 4 cos 60 and 4 sin 60. 3 Newton already vertically downwards लग रहा है। इस टेंशन के कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं, ये देखते हैं क्या आते हैं। इफ दिस वैल्यू इज अल्फा, इफ दिस एंगल इज अल्फा, इसका मतलब ये है जो नीचे वाला एंगल होगा इस जगह पे, दिस इज आल्सो अल्फा, ऑल्टरनेट एंगल्स। तो टी के कंपोनेंट्स क्या हो गए? पर एक आपके पास राइट पे लग रहा होगा, एक डाउनवर्ड्स लग रहा होगा। लेट्स रिप्रेजेंट देम हियर एज वेल। सो वन कंपोनेंट ऑफ टी इज गोइंग टू बी एक्टिंग टू द राइट एंड वन एक्टिंग डाउनवर्ड। जो एंगल के साथ वाला कंपोनेंट है उसके साथ cos लग जाएगा, so have t cos alpha here, and the other component is going to have sin, so that's t sin alpha. Okay, अब आपको सिंपली क्या करना है? ऑपोजिट फोर्सेस पे इक्वेट कर देना है। लेफ्ट वाली फोर्स राइट वाली फोर्स के इक्वल और अपवर्ड्स फोर्स डाउनवर्ड फोर्स के इक्वल। ठीक है, दैट्स इट। सो यू हैव left equal to right and upwards force equal to downward forces. What do we get from this? 4 cos 60, that is equal to t sin alpha. That's one equation that we're getting. Upwards force is 4 sin 60. Downward is 3 plus t cos alpha. ठीक है, ये आपके पास ये दो इक्वेशंस आ गई। यू कैन सॉल्व देम साइमल्टेनियसली एंड दैट इज गोइंग टू गिव यू द वैल्यूज फॉर t एंड alpha. So यहाँ से आपके पास आ जाएगा t sin alpha equals 4 cos 60. Let's see what this turns out to be. 4 cos 60 की वैल्यू क्या आती है? कैलकुलेटर आपने अपना डिग्रीज मोड में रखना है थ्रू आउट दिस पेपर, तो आप एक दफा चेक कर लें, डिग्रीज में होना चाहिए। 4 cos 60 that is giving me 2. t sin alpha is 2. उधर से आप t cos alpha फाइंड कर लें। 4 sin 60 minus 3, and that's giving me 0.4641. 0.4641. अब इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लें। यू कैन डू इट हाउएवर यू वांट। वन पॉसिबिलिटीज आप इनको डिवाइड कर दें, आपके पास आ जाएगा t sin alpha over t cos alpha equals 2 over 0.4641. t and t get cancelled and you have tan alpha equal to this thing. आप इनको t को सब्जेक्ट बना सकते हैं दोनों में और उनको इक्वेट कर सकते हैं। You get the same thing from that as well. If this confuses you, that's also fine. This is giving me tan alpha equal to 4.309. इसे tan inverse find कर लें and see what that gives you. Tan inverse is giving me 76.94 degrees here. This is the value of alpha that we were looking for. इसको वापस इनपुट कर दें किसी भी इक्वेशन के अंदर। Let's say मैं फर्स्ट वाली में इनपुट करता हूँ, that gives me t sin of 76.94 degrees equals 2. यहाँ से आपके पास t की वैल्यू आ जाएगी 2 divided by sin of this, and that's giving me 2.053. That is your tension. Okay, turns out it wasn't that difficult. It was आसान question था, but this is how you would approach this. Question number 3 from this paper. Okay, let's move on. Let's move on to a relatively more difficult looking one. This was 3. The next one that we want to do is question number 6 from this paper. Let's have a look at this. It says 3 particles A, B, and C of masses 0.3 kg, 0.4 kg, and m kg respectively lie at rest in a straight line on a smooth horizontal plane. The distance between B and C is 2.1 meters. A is projected directly towards B with speed 2 meters per second. After A collides with B, the speed of A is reduced to 0.6 meters per second, still moving in the same direction. Show that the speed of B after the collision is 1.05. अच्छा देखें, ये 3 masses दिए हुए हैं A, B और C के। They lie on a smooth plane. Plane smooth है, इसका मतलब है कोई deceleration नहीं है, जिस स्पीड में मूव कर रहे हैं उसी स्पीड में मूव कर रहे हैं। स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेंगी,
जब वो उनकी मूवमेंट हो रही है, राइट, बिकॉज कोई भी फोर्स इंपैक्ट नहीं करी है इस तरह से। बी और सी का डिस्टेंस दिया हुआ है और बी की इनिशियल स्पीड दी हुई है और फिर ए की स्पीड इसमें क्या है 0.6 पे आ जाती है, still moving in the same direction. Okay, so this is the information that's given. Let me represent that here. सबसे पहले उसने कहा है बी की स्पीड फाइंड करनी है, तो पहले हम ए और बी को देख रहे हैं। सर we're not concerned about C at this point. A and B look like this. Okay, A is projected towards B with speed 2 meters per second. This is what is happening. A को आप राइट साइड प्रोजेक्ट कर रहे हो 2 meters per second पे, ठीक है। So early before collision speeds क्या है इनकी 2 meters per second for B. इनिशियली सारे रेस्ट के ऊपर है, तो B की इनिशियल स्पीड 0 है। आफ्टर कोलिजन व्हाट हैपेंस इज A की स्पीड इज रिड्यूस्ड टू 0.6, मूविंग इन द सेम डायरेक्शन, अभी भी राइट पे मूव कर रहा है, बट नाउ इट्स 0.6 मीटर्स पर सेकंड। आपने क्या फाइंड करना है, B की स्पीड फाइंड करनी है। लेट्स कॉल दिस VP। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करते हैं, दैट विल गिव यू द रिजल्ट। मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। मोमेंटम बिफोर कोलिजन क्या होगा, A का मास कितना है, A का मास is 0.3 kilograms, B is 0.4 kilograms. Let's apply conservation of momentum. Mass of A, which is 0.3, into velocity of A, that is 2, plus mass of B, which is 0.4, into velocity of B, which is 0. That equals final momentum after collision. वो क्या हो जाएगा, 0.3 into 0.6 plus 0.4 into VB. यहाँ से आपके पास VB की वैल्यू आ जाएगी. You can see what that turns out to be. Okay, so VB is going to be 0.6 minus 0.18 divided by 0.4, and that's giving me 1.05 meters per second. ठीक है, ये आपके पास velocity आ गई B की. That's what we were looking for. Let's look at the second part of this. It says after the collision between A and B, B moves directly towards C. B now collides with C. After this collision, the two particles coalesce and have a combined speed of 0.5 meters per second. Okay, so now we are talking about B and C. So we have this particle B and we have this particle C. Before collision क्या हो रहा है, दोनों अलग अलग particles हैं, तो हम उनको अलग अलग पहले यहाँ पे इस तरह से represent कर लेते हैं. B is moving to the right, remember, 1.05 meters per second पे. This is 1.05 meters per second. What about C? C was at rest, right? वो तो rest पे. This is 0 meters per second. What happens after collision? उसने कहा the two particles coalesce. Coalesce का मतलब होता है वो merge हो जाते हैं, एक single object बन जाते हैं. Let's call this merged object, इसको भी नाम दे देते हैं. इसको कहते हैं हम, ये आपके पास जो combined particle is, this is D. Okay, so after collision, what you have is particle D. D की speed कितनी है? 0.5 meters per second. Okay, now of course right पे move कर रहा होगा वो भी, because B ने left से आके C को hit किया है, तो movement जो right पे हो सकती है, left पे तो जा नहीं सकते वो. तो ये आपके पास D की speed आ गई to the right. ठीक है, अब क्या करना है, आपको M find करना है. What was M? B का mass उसने दिया हुआ था, B का mass was 0.4 kg. So B का mass is 0.4 kg. C का mass was M. D का mass कितना आएगा? D का mass will be the sum of those two, M plus 0.4. Again, apply conservation of momentum. That's all that you have to do here as well. Momentum before collision, that should be equal to momentum after collision. All right. Now, what's the momentum before collision? 0.4 into 1.05 plus M into 0. On the right side, you have M plus 0.4 whole multiplied by 0.5. इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास m की वैल्यू आ जाएगी. ठीक है, लेफ्ट साइड पे हमारे पास क्या आ रहा है, 0.4 into 1.05. Let's figure out what this turns out to be. This is 0.42 on the left side. On the right side, you have 0.5 m plus 0.4 into 0.5, and that is giving me 1/5, which is 0.2. 0.5 m equals this. यहाँ से आपको m की वैल्यू आ जाएगी, डायरेक्टली लिखते हैं आप. 0.42 minus 0.2, that's going to be 0.4. 0.4 divided by 0.5, and that turns out to be 4/5, which is 0.42 minus 0.2 divided by minus 0.42 minus 0.2, which is 0.22 divided by 0.5, and that is 11/25 or 0.44 kilograms. That's
what the mass turns out to be here. Okay, that was the second part. First two parts, काफी आसान थे. Let's move on to the next one. Now it says find the time that it takes from the instant when B and C collide until A collides with the combined particle. Okay, now that's interesting. This is something that will need some thinking. From the instant when B and C collide until A collides with the combined particle. अच्छा देखें, आपको अब शुरू से देखना पड़ेगा. शुरू से क्यों देखना पड़ेगा? Because शुरू से नहीं भी देखें तो आपको देखना पड़ेगा जब A और B की कोलिजन हुई थी, पहली कोलिजन, उसके बाद से. बिकॉज उस कोलिजन के बाद ए भी तो मूव कर चुका होगा ना कुछ, तो आपको उसका भी सोचना है कि ए कितना मूव कर गया है, वो कहां पे चला गया है बिफोर द सेकंड कोलिजन हैपेंस. ओके, तो लेट्स थिंक अबाउट दिस. सबसे पहले हम देखते हैं जब पहली कोलिजन हुई थी. पहली कोलिजन के बाद वी कैन से ए वाज हियर, बी वाज राइट नेक्स्ट टू इट एंड सी वाज एट अ डिस्टेंस ऑफ, उसने यहाँ पे लिखा हुआ है कहीं पे, कहा था it's at the distance of 2.1 meters. This is the initial state. Initial मतलब जब A और B की collision है, उस point पे this is how it looks like. This is 2.1 meters. अब देखते हैं क्या होता है. अब इस point के बाद B right पे move कर रहा है. इस point के बाद B right पे move कर रहा है और A भी right पे move कर रहा है, दोनों right पे move कर रहे हैं. अब B को C से जाके collision में कितना time लगता है, ये हमने देखना है. ठीक है, बी जाके सी को हिट कर रहा है, उसको कितना टाइम लगता है उसको हिट करने में, जाके सबसे पहले ये फिगर आउट कर दें. रिमेंबर फर्स्ट कोलिजन के बाद ए और बी की स्पीड क्या थी, ये हमने कहीं पे निकाली हुई है. पहले ए की स्पीड उसने बताई हुई थी 0.6, बी की स्पीड हमने निकाली है 1.05. लेट्स पुट देम देयर, 0.6 एंड 1.05 यहाँ पर लिख लेते हैं. ए की स्पीड वाज 0.6 meters per second आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन एंड बी की स्पीड वाज 1.05 meters per second. ये उन दोनों पार्टिकल्स की स्पीड है राइट आफ्टर द फर्स्ट कोलिजन. अब नेक्स्ट कोलिजन से पहले कितना टाइम लग गया, नेक्स्ट कोलिजन से पहले कितना टाइम लग गया, ये आपको पहले फिगर आउट करना है. सो लेट्स फाइंड द टाइम टेकन फॉर बी टू हिट सी. बी से सी पे जाने में कितना टाइम लगा है, लेट्स फिगर दिस आउट फर्स्ट. इनफैक्ट इसको हम यहाँ पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं. इसको कहते हैं हम, ये पॉइंट एक्स है एंड दिस पॉइंट इज लेट्स से वाई. तो x से y पे जाने में कितना टाइम लगा है b को, x से y पे जाने b को कितना टाइम लगा है, ये हम देखना चाह रहे हैं. b की स्पीड पता है हमें 1.05. इट्स कांस्टेंट स्पीड, राइट, कांस्टेंट स्पीड है, डिस्प्लेसमेंट इज 2.1, तो हम निकाल सकते हैं इसको टाइम कितना लगा आएगा, जस्ट डिस्टेंस ओवर स्पीड, राइट. कांस्टेंट स्पीड में हम वो सिंपल वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं, राइट. यस सर, यू कैन जस्ट डू दैट. Distance over speed in this case because the speed is constant. So 2.1 divided by 1.05. Let's see what that turns out to be. 2.1 over 1.05. This is giving me 2 seconds. ठीक है, this is 2 seconds. इसका मतलब क्या है, फर्स्ट और सेकंड कोलिजन के दरमियान में 2 seconds लगे हैं. This is time between the two collisions. अब हमने क्या करना है, हमने फाइंड करना है इतने टाइम में ए भी तो राइट में मूव कर रहा था, तो ए कहां पे पहुंच गया, मूव करते करते ए किस पॉइंट पे पहुंच गया, राइट. इन 2 seconds के अंदर ए कहां पे पहुंच गया, ये फिगर आउट करना. टाइम इक्वल्स 2 इनपुट करें, ए की स्पीड कितनी है, ए की स्पीड हमारे पास है 6 meters per second. टाइम इज 2, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया इसने, इससे हमारे पास ए का डिस्टेंस ट्रैवल आ जाएगा. दैट्स गोइंग टू बी 2 into 6 into 2. That turns out to be, there's something wrong here. 6 into 6, 0.6 था, sorry. Yeah, so इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है. So this is 0.6 and that is 1.2 meters. तो जब आपकी सेकेंड कोलिजन हुई है तो ए कहां पे पहुंच गया है, वो 1.2 meters उसने ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया हुआ है. तो अब आपको पता चला है उनकी पोजीशंस क्या है. ठीक है, अब देखते हैं उनकी पोजीशंस क्या है जब सेकंड कोलिजन हुई है. सो आफ्टर सेकंड कोलिजन नाउ,
दिस इज व्हाट द स्टेट इज। ये आपने पहले फिगर आउट करना था। ये पॉइंट एक्स था पहले, राइट, जहां से उन्होंने स्टार्ट किया था बी और सी ने। ए जो है आगे मूव कर गया, इस पॉइंट पर आ गया कहीं पे। कितना ट्रैवल किया इसने? इसने ट्रैवल कर लिया 1.2 मीटर्स। 1.2 मीटर्स ने ट्रैवल कर लिया। अब जहां पे बी और सी कोलाइड कर रहे हैं, जहां पे पार्टिकल डी बन गया, उस पे टोटल डिस्टेंस कितना था वहां तक? टोटल डिस्टेंस वाज 2.1 मीटर्स। टोटल डिस्टेंस शुरू में 2.1 मीटर्स था। तो अब कितना डिस्टेंस रह गया ए और बी के दरम्यान में? इनका डिफरेंस फाइंड कर लें। 1.2 meters and 2.1, that's going to give you 0.9 meters। तो ए और डी जो है इनके दरमियान में इस टाइम के ऊपर, इस टाइम इंस्टेंट के ऊपर कितना डिस्टेंस है? 0.9 मीटर्स डिस्टेंस है ए और डी के दरमियान में। ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर दिस इज द डिस्टेंस। अब बाकी सब कुछ यहाँ से इरेज कर देते हैं। वी हैव अंडरस्टूड व्हाट द सिचुएशन लुक्स लाइक। नाउ दिस इज समथिंग लाइक दिस। ओके, अब इस पॉइंट पे इनकी स्पीड्स क्या है? A is moving to the right. A is moving to the right at what speed? 0.6 meters per second. What about D? D क्या करे? D is रखा हुआ है, yeah, combined speed उनकी कितनी? 0.5. D is moving at a speed of 0.5 meters per second. D is moving to the right at 0.5 meters per second. अब क्या होएगा? उसने कहा है फाइंड द टाइम दैट इट टेक्स फ्रॉम द इंस्टेंट व्हेन बी एंड सी कोलाइड। अब ये जो सेकंड कोलिजन हो गया, इसके बाद डी बन गया, इसके बाद कितना टाइम लगा है इस सेकंड कोलिजन में? ओके, तो अब हम क्या करें? अब हम देखते हैं इसमें कितना टाइम लगेगा। डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना है? 0.9 मीटर्स का डिस्टेंस है, ये गैप है इनके दरमियान में। अब ये गैप कैसे कम होएगा? अब देखें कितनी स्पीड पे एक दूसरे के पास आ रहे हैं। ए की स्पीड कितनी है? 0.6 मीटर्स पर सेकेंड। और डी की स्पीड कितनी है? 0.5 मीटर्स पर सेकेंड। तो इनके दरमियान में गैप कितने से कम हो रहा है? इनके दरमियान में गैप किस स्पीड से कम हो रहा है? ए इज मूविंग 0.1 मीटर्स पर सेकेंड फास्टर, राइट? तो 0.6 माइनस 0.5, इससे हमें मिलता है 0.1 मीटर्स पर सेकेंड। दिस इज द रिलेटिव वेलोसिटी बिटवीन देम, एक दूसरे से कम के रिलेटिव। ये 0.1 मीटर्स पर सेकेंड इनके दरमियान में स्पीड इस रेट के ऊपर कम हो रही है। So this is the speed, this is the relative velocity between the two particles. Okay, तो अब टाइम निकालना है आपने। टाइम कैसे आएगा? डिस्टेंस कितना था दोनों के दरमियान में, और उनकी स्पीड क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी, किस स्पीड से वो एक दूसरे के करीब आ रहे हैं 0.1 के ऊपर। तो आप क्या करेंगे? 0.9 divided by 0.1 and that gives you 9 meters per second. Sorry, 9 seconds. Time था यहाँ पे, so this is going to be 9 seconds. 9 seconds लगेंगे for A to catch up with B. इतना टाइम लगेगा उसको। ठीक है, I hope that makes sense. शामिल देखें, टेंशन्स का रूल ये है, अगर आपके पास दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, अगर आपके पास दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, आपने उनकी टेंशन्स इक्वल एज्यूम नहीं करनी है। दो डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं, उनकी टेंशन इक्वल नहीं एज्यूम करनी। या फिर दो स्ट्रिंग्स हैं, या फिर एक स्ट्रिंग है, उनके दरमियान में कोई ब्लॉक आ रहा है, तो तब भी आपने स्ट्रिंग उसकी टेंशन इक्वल एज्यूम नहीं करनी। लेट मी एक्चुअली शो दैट यू जल्दी से। should be here somewhere. And one forces an equilibrium tension. ये आपने रूल याद रखना है टेंशन्स का। आपके पास इक्वल टेंशन वाले नॉर्मली ये केस होंगे। सिंगल स्ट्रिंग है, वो किसी रिंग से पास कर रही है, या तो ये वाला केस होएगा नॉर्मली, या फिर वो पुली के ऊपर से पास कर रही है। इन दो केसेस में टेंशन जो है वो इक्वल हुआ करेगी दोनों साइड्स के ऊपर। इसकी रीजनिंग ये है, आपने जो जनरल रूल याद रखते हैं कि सिंगल स्ट्रिंग होनी चाहिए, दोनों साइड पे एक ही स्ट्रिंग है, सिंगल स्ट्रिंग जा रही है थ्रू आउट, एंड द स्ट्रिंग इज फ्री टू स्लाइड और मूव थ्रू द ऑब्जेक्ट। अब रिंग के थ्रू स्ट्रिंग आपकी फ्री टू स्लाइड है ना, रिंग आपकी यहाँ से स्लाइड करके ऊपर नीचे जा सकती है, यहाँ पे दोनों टेंशन इक्वल होंगी। इसी तरह पुली के अराउंड भी स्ट्रिंग इज फ्री टू स्लाइड।
ऑन द अदर हैंड अगर आपके पास ऐसा केस है जब डिफरेंट स्ट्रिंग्स है, जब डिफरेंट स्ट्रिंग्स हैं तब तो टेंशन आपने इक्वल अज्यूम नहीं करनी। और अगर सिंगल स्ट्रिंग भी है, सिंगल स्ट्रिंग में भी इफ द स्ट्रिंग इज नॉट फ्री टू स्लाइड, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ऐसे सिंगल स्ट्रिंग है लेकिन एक ब्लॉक के दरमियान में जिसके ऊपर वो टाई की हुई है, तो जब टाई की हुई है तो तब भी आपने इक्वल टेंशन अज्यूम नहीं करनी है। ठीक है, अब देखिए इस पोजीशन में अगर कोई और फोर्स नहीं लग रही ना, अगर इस तरह से स्टेबल है तो फिर टेंशन इक्वल हो जाएंगी। लेकिन अगर मैं कोई भी और फोर्स यहाँ पे ऐड करा दूं, लाइक से एफ यहाँ पे राइट साइड पे लग रहा है, तो टेंशन इक्वल नहीं रहेंगी। तो आपने इन जनरल इनको अज्यूम इक्वल नहीं करना। ठीक है, सो व्हाट्स द कंडीशन? अभी के लिए आप बस याद रखें, रिंग के थ्रू पास कर रहे हैं ना या पुली के ऊपर से पास कर रहे हैं तब इक्वल होंगी, उसके अलावा दे आर ऑलमोस्ट नेवर गोइंग टू बी इक्वल। अज्यूम नहीं करना आपने इक्वल। ठीक है, दैट्स थिंग। And these are the conditions that you use. String should be free to slide, and single string then equal tension. And if there are different strings, फिर equal tension नहीं होती है। और अगर single string भी है that's not free to slide or move, that's also unequal tension. Okay. Okay, I hope that makes sense. Let's move on. हमने part question number इसका कर लिया 6. Okay, let's move on to the next one, the last one. A particle P travels in a straight line, starting at rest from a point O. The acceleration of P at time t seconds after leaving O is denoted by a meters per second squared. Acceleration का उसने formula आपको दिया हुआ है. Now, it starts from rest, so that's an important piece of information. O से उसने start किया, rest से. अच्छा. ये दो इक्वेशंस दी हुई हैं। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ पी एट टाइम इक्वल्स 4। ओके, एक्सीलरेशन दी है, आपको वेलोसिटी फाइंड करनी है। क्या करते हैं वेलोसिटी से एक्सीलरेशन में जाने के लिए? यू हैव टू इंटीग्रेट, राइट? अब t इक्वल्स 4 कौन सी इक्वेशन में आ रहा है? ये फर्स्ट इक्वेशन में आ रहा है। ठीक है, अब तो फिर डर लग रहा है तो प्लीज अभी आप ये नहीं देखें, रिवाइज योर नोट्स। डर लग रहा है तो देयर इज नो रीजन टू बी वाचिंग दिस राइट नाउ। We are doing the relatively difficult questions. आपको डर बढ़ जाएगा। This is just for those of you who are well prepared already and are looking for some tricky questions in the past papers. This is directed at them primarily. If you are afraid of the paper at this point, या फिर आपको लग रहा है तैयारी इतनी अच्छी नहीं है इस point पे, the better idea is go back and revise your notes. Notes सही तरह से revise करें properly. That's what you should be doing. Revise all the formulas. You should not be forgetting any formulas. That's important. Focus on that right now. Okay, this is for those who are very well prepared already and are looking for some of the trickier questions that they have in the recent past papers. So that's what I'm doing it for. Okay. Otherwise, ये आपको नहीं देखना चाहिए इस point पे. Revise your notes. That's better at this point. अच्छा, find the velocity of p at t equals 4. t equals 4 के लिए कौन सी इक्वेशन वैलिड है? फर्स्ट वाली। एक्सेलरेशन is 0.3 into t raised to power 1/2. Forget about paper one. It was difficult, yes. Everyone found it difficult. तो threshold लो होगा इंशाल्लाह। अभी फोकस करें बाकी पेपर्स के ऊपर, वो थ्रेशोल्ड उसको कर लेगा हैंडल। अच्छा, इसको इंटीग्रेट करें, वेलोसिटी आ जाएगी 0.3 remains as it is. T के पावर में 1 ऐड किया, 1/2 plus 1, that's 3/2 divided by 3/2. But remember, whenever we integrate, we have to have a plus C unless we are inputting limits. Okay, sorry about that. इसका क्या हो गया? Okay, जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं, we need to have a plus C unless आप लिमिट्स इनपुट करें। यहाँ पे लिमिट्स इनपुट नहीं करते हैं, लिमिट्स हम इनपुट करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। यहाँ पे तो नहीं करना। ठीक है, ये आपके पास आ गया। अब C की वैल्यू कैसे आएगी? We are given that it starts from rest at point O. ओके, तो इसका मतलब है स्टार्टिंग में इनिशियल जो उसकी वेलोसिटी वो 0 आएगी। जब इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो टाइम इक्वल 0 पे आप कहेंगे वेलोसिटी 0 है। ठीक है, लेट्स सिंपलीफाई दिस। फर्स्ट ऑफ ऑल 2 विल गो टू द न्यूमरेटर एंड इट विल बिकम 0.6/3। ये इवैल्यूएट कर लेते हैं। 0.6/3 is going to be 0.2. So we have let's confirm this, 0.1 and 0.2 आएगा। 0.2 into t raised to power 3/2 plus c। वो पॉइंट इनपुट कर दें, t equal 0 and v equal 0, उससे आपके पास आएगा c equal 0। ये शो करना जरूरी होएगा, आपने c को बस इग्नोर नहीं कर देना। c का आपने लिखना है कि c की वैल्यू 0 आती है। ठीक है, so what do we have? v equals
0.2 t raised to power 3/2। ये आपको वेलोसिटी का फंक्शन आ गया, इसमें t की वैल्यू इनपुट कर दें, t इक्वल्स 4 इनपुट करें और अब देखें सब क्या वेलोसिटी मिलती है। v equals 0.2 into 4 raised to power 3/2। Evaluate this on a calculator and see what that gives you। Velocity मेरे पास आ जाती है 2 raised to power 3 8 into 0.2 and that's 1.6। Velocity is 1.6 meters per second. That's what we were looking for in the first part. Let's look at part B now. It says it's given that there is no change in the velocity of p at t equals 4 and that the velocity of p at t equals 16 is 0.3 meters per second. So that k equals 2.6 and find an expression in terms of t for the velocity of p for time between 4 and capital T। तो second part के लिए उसने velocity की equation मांगी आपसे। अच्छा, उसने कहा velocity एकदम change नहीं होती है, time equals 4 पे जो velocity आपको first part से मिलती है वही second part में velocity होनी चाहिए। So that's what we are given। और time equals 16 के ऊपर उसने एक और हमें point दे दिया कि उस पे उसकी velocity 0.3 है। सबसे पहले हमें show करना है कि k की value 2.6 है। Let's do that। Yes, 4 टाइम इक्वल्स 4 के ऊपर वो आपकी बाउंड्री बन रही है ना, तो बाउंड्री पे उसने बता दिया कि टाइम इक्वल्स 4 के ऊपर जो वेलोसिटी है वो एकदम से चेंज नहीं होगी। एंड दैट्स व्हाट जनरली हैपेंस, बाउंड्री के ऊपर वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट एकदम से चेंज नहीं हो रहे होते, एक्सेलरेशन चेंज हो रही होती है। वेलोसिटी सिर्फ बहुत रेयर केसेस में चेंज होती है, वो कब होती है जब आपका कोई कोलिजन हो जाए आपकी, ठीक है, उस केस में आपकी वेलोसिटी चेंज होती है इंस्टेंटेनियसली, अदरवाइज नहीं होती है। अली, दिस पेपर इज सॉल्व्ड, लुक एट द डिस्क्रिप्शन। आप ये पेपर के इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन देखें, डिस्क्रिप्शन में आपके पास एक प्लेलिस्ट होगी ईयरली पास्ट पेपर्स के नाम से, ईयरली पास्ट पेपर्स के नाम से प्लेलिस्ट है, उस प्लेलिस्ट में आपको वो पेपर मिल जाएगा। ये 2 पार्ट्स में हुआ होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है उसमें आपको वो क्वेश्चन मिल जाएंगे मुश्किल वाले सारे, ठीक है। Have a look at that playlist, उसमें आपको मिल जाएगा। Okay, let's look at this. It's given that there is no change in. Okay, let's find this. Now we have the first part and the second part. Second part पे focus करते हैं अभी। A is equal to minus kt raised to power minus 3/2। Yeah, this is the equation that we have for time between 4 and capital T। 4 इसमें इंक्लूड नहीं किया हुआ उसने, इक्वालिटी का साइन नहीं है, एंड कैपिटल टी। ये आपके पास एक्सेलरेशन की इक्वेशन है। उसने कहा एक्सेलरेशन वेलोसिटी एकदम चेंज नहीं होती है। अब पहले तो वेलोसिटी का फंक्शन फाइंड कर लें, कैसे आएगा, इसको इंटीग्रेट करेंगे। माइनस के रिमेन्स एज इट इज, दैट्स अ कांस्टेंट, टी के पावर में 1 ऐड किया, माइनस 3/2 प्लस 1, दैट्स माइनस 1/2 डिवाइडेड बाय माइनस 1/2 प्लस सी। डू नॉट फॉरगेट प्लस सी हियर, लिमिट्स नहीं इनपुट करे तो प्लस सी हमेशा लगाना है, ठीक है। 2 पर जाएगा, ये बन जाएगा 2k into t raised to power minus 1/2 plus c। This is the velocity equation that we get from this। अब मसला ये है हमें k भी नहीं पता इसमें और c भी नहीं पता, इसके लिए उसने 2 पॉइंट्स बता दिए आपको, वो यूज करके हम k और c की वैल्यूज वगैरह ऐड कर लेंगे। क्या पॉइंट्स है, हमें पता है टाइम इक्वल्स 4 के ऊपर उसने कहा वेलोसिटी एकदम चेंज नहीं होती है, तो टाइम इक्वल्स 4 के ऊपर वेलोसिटी क्या होनी चाहिए जो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया, v equals 1.6। let's put that point here first of all। t equals 4 and v equals 1.6। let's see what we get from that। 1.6 equals 2k into 4 raised to power minus 1/2 plus c। now 4 is from minus 1/2, ये डिनोमिनेटर में जाएगा, ये 2 बन जाएगा और ये 2 कैंसिल हो जाएंगे, आपके पास बचेगा k plus c equals 1.6। this is one equation that we're getting। then what you do is you input the other point। उसने कहा t equals 16 के ऊपर जो velocity की value है that is 0.3। let's put that and see what that gives you। v is 1.6। 1.6 equals 2k, no sorry 16 not 1.6। this is क्या कह रहे हैं यहाँ पे, velocity की value क्या थी इसमें, 0.3 sorry, yeah, velocity is 0.3। 0.3 equals 2 into k into t, which is 16 raised to power minus 1/2 plus c। this is another equation that you're getting। 16 नीचे जाएगा डिनोमिनेटर में, 1/4 हो जाएगा, you're going to get 1/2k plus c equals 0.3। this is another equation that we're getting। इनको simultaneously solve कर लें आपके पास,
COK की वैल्यूज आ जाएंगे, ठीक है। C equals 0.3 minus 1 over 2K from here. From the other equation, we have 1.6 minus K. Equate both of them, we'll find the value of K from this. 1.6 minus K equals 0.3 minus half K. इसको सॉल्व करें, K की वैल्यू आएगी. Let's do that. इसने प्रूव करने के लिए कहा हुआ तो आपको पता फाइनल आंसर क्या आना चाहिए. 1.6 minus 0.3 multiplied by 2, and that's giving me 2.6. Is that correct? Yeah. So K की वैल्यू 2.6 आ गई. इससे इसको इस इक्वेशन में इनपुट करते हैं, वापस corresponding value for C आ जाएगी. The value of C therefore turns out to be C equals 1.6 minus 2.6, and C is minus 1. C की वैल्यू भी आ गई. Once you have the values for K and C, now you can write down the equation. वो इक्वेशन लिख दें, उसमें वैल्यूज इनपुट कर दें. V equals 2 into K. 2 into 2.6. What would that be? 5.2. 5.2 into T raised to power minus 1 over 2 plus C. C की value minus 1 है, so I have minus 1 here. This is what the equation should turn out to be. उसने कहा था find an expression in terms of T for this part. Okay? ये आपके पास इसका final result आ गया. That's what we were looking for. ठीक है, let's move on. Let's look at the next one now. Okay, given that P comes to instantaneous rest at T equals T, find the exact value of capital T. Instantaneous rest से क्या मतलब है? Velocity यहाँ पे 0 हो जाती है, right? तो velocity का function आपके पास आ चुका है. Velocity is 5.2 into T raised to power minus 1 over 2 minus 1. This is the velocity function. All you have to do is just put V equal to 0 here and see what that gives you. 0 equals 5.2 into T raised to power minus 1 over 2 minus 1. 1 goes to the other side and becomes 5.2 over T raised to power 1 over 2. And we have T raised to power 1 over 2 equal to 5.2. Square कर लें दोनों sides का. 5.2 का square करें, देखना आपके पास क्या आता है. 5.2 squared, that is giving me उसने exact value बताया यहाँ पे. Okay, this is giving me 27.04. That's the value of T that we're getting. This is exact, right? आगे और decimals नहीं है, तो पूरा आपने लिखना है exact. अब इसमें round off नहीं कर सकते. Round off नहीं कर सकते हम बिल्कुल. That's very important. Exact का मतलब है you have to give the complete result. Decimals में भी लिख सकते हैं इसमें because exact value ही आ रही है. या उसको fraction में लिखना चाहें तो fraction आपको calculator क्या दे रहा है? Calculator में आप करेंगे, आपको calculator देगा 676 over 25, and that's also fine. दोनों तरह लिख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि ये decimals में भी लिखते हैं तो ये सिर्फ 2 decimal places तक आते हैं, आगे ये कोई राउंड ऑफ नहीं करना पड़ता आपको, तो वो दोनों तरह लिख सकते हैं. It's not to be correct. Let's look at part D now. It says find the total distance traveled between T equals 0 and T equals T. अच्छा, T की वैल्यू क्या आ गई? 27.04. इस पूरे टाइम के अंदर आपने टोटल कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया ये फिगर आउट करना है. Now how do you do that? Remember, आपको जर्नी को ब्रेक करना पड़ता है उन पॉइंट्स के ऊपर जब आपकी वेलोसिटी 0 होती है, राइट? अब फर्स्ट पार्ट में देखना सबसे पहले. फर्स्ट पार्ट में वेलोसिटी आपके पास क्या आ रही थी? वेलोसिटी का फंक्शन फर्स्ट पार्ट में दिस वाज द वेलोसिटी फंक्शन v इक्वल 0.2 into t raised to power 3 over 2. इसमें आप v की वैल्यू 0 इनपुट करेंगे तो उससे आपके पास t की वैल्यू 0 ही आएगी. सो इसका मतलब है फर्स्ट पार्ट में 0 से लेकर 4 तक तो कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है. सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट दैट. 0 से 4 तक देयर इज नो डायरेक्ट चेंज इन डायरेक्शन. सेकंड में देख लें, इसमें कोई चेंज इन डायरेक्शन है? सेकंड में हमारे पास ये वेलोसिटी की इक्वेशन है, इसमें मैंने वेलोसिटी को 0 इनपुट किया था, इससे भी सिर्फ एक ही टाइम की वैल्यू आई है और वो क्या आई है? 27.04. और उस पे तो आपने एंड कर देना अपनी जर्नी को. तो देयर इज नो चेंज इन डायरेक्शन ड्यूरिंग मोशन. ओके, that we have to worry about. There's no change in direction that we have to worry about. So all you have to do is दोनों equations को अलग-अलग इंटीग्रेट करें, उनमें लिमिट्स डाल दें और उसमें आपके पास आ जाएगा. Okay, Saif, let me go back to that after this. ठीक है, I'll come to that. ये जो कंप्लीट कर लेंगे लास्ट पार्ट, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ. क्या कर रहे थे हम? या वेलोसिटी फंक्शन दोनों आ गए. फर्स्ट वेलोसिटी फंक्शन वाज 0.2
t raised to power 3/2, and the other velocity function was 5.2 into t raised to power -1/2 -1. ये आपके पास दो वेलोसिटी फंक्शन है, दोनों को इंटीग्रेट करें। पहले वाले दोनों के टाइम इंटरवल्स आपको पता है, आप निकाले हुए और उनमें वो लिमिट्स इनपुट कर दें। लेट्स सी व्हाट वी गेट फ्रॉम दिस। टाइम की वैल्यूज क्या इनपुट करनी है? पहले पार्ट में 0 से लेकर 4 तक, सेकंड पार्ट में 4 से लेकर 27.04 तक। लेट्स इंटीग्रेट इनपुट लिमिट्स। ये फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट आ जाएगी आपके पास 0.2 into t raised to power 5/2 divided by 5/2, and that gives you 2 ऊपर जाएगा 0.4 हो जाएगा, 0.4 divided by 5, that is going to be 0.08. So you have 0.08 into t raised to power 5/2. इसमें limits input करनी है from 0 to 4. Let's input the limits. 0.08 into 4 raised to power 5/2 minus 0.08 into 0 raised to power 5/2. Okay. Acha. Let's see what this turns out to be. 32 into 0.08. That is 2.56. ये first part की displacement आ गई. Right, 2 raised to power 5 is 32, 32. Yeah, that should be correct. दूसरे part को integrate कर लें. देखें इसमें क्या आता है. 5.2 into t raised to power -1/2 plus 1, that's 1/2 divided by 1/2. minus 1 का इंटीग्रल, 1 का इंटीग्रल with respect to t क्या होएगा? t. लिमिट्स इनपुट करनी है 4 से लेकर 27.04 तक. लिमिट्स इनपुट करके दिखाना जरूरी है, अदरवाइज आपको मार्क्स कट जाएंगे. पहले सिंप्लीफाई कर लें इसको थोड़ा सा, 2 ऊपर चला जाएगा. It's going to become 10.4 t raised to power 1/2 minus t. Input the limits from 4 to 27.04. Okay, now what do we get when you do that? 10.4 into 27.04 raised to power 1/2 minus 27.04. This is what you get when you input 27.04. Subtract from this the case when you input 4. That's going to be 10 into 4 raised to power 1/2 minus 4. Evaluate this and see what this turns out to be. Okay. अच्छा, मैंने कुछ यहाँ पे मिस कर दिया. 10 into 4, ये 10.4 है, तो लेफ्ट पे डिफरेंट लिखा हुआ है, राइट पे डिफरेंट लिखा हुआ है. This should have been 10.4 here. ठीक है, इसको evaluate करते हैं, देखते हैं हमारे पास क्या आता है. सिर्फ वेलोसिटी को इंटीग्रेट करके जब डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, वैसे तो प्लस ही होता है यहाँ पे. अगर आपने डिस्प्लेसमेंट की एक्सप्रेशन निकालनी होती कि डिस्प्लेसमेंट का फंक्शन क्या है, उसमें आपको प्लस ही डालना पड़ता है. अगर लिमिट्स आप इनपुट कर रहे हो और डिस्प्लेसमेंट फाइंड कर रहे हो, डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हो फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर, उसमें आप इसको सी कंसिडर करना जरूरी नहीं होता. ठीक है, लेट्स सी व्हाट दिस टर्न्स आउट टू बी. 10.4 into 27.04 raised to power 0.5. Subtract from this 27.04. पहले वाले पार्ट का मेरे पास आ रहा है 67.67/25, 676/25. Subtract from this the second part, that's 0.4 into 2 minus 4, and that's minus 16/5. ये evaluate करें, देखना बस क्या आता है. 676 divided by 25 plus 16/5, and that's giving me 30.24. ठीक है, तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड आपको निकालना था. टोटल डिस्टेंस अब देख लें क्या आता है, इन दोनों को ऐड कर लें. 2.56 plus 30.24. Let me just check the working again. I think I'm missing something. I'm just checking the final answer. पहला वाला 2.56 ये सही है. दूसरे वाला में कोई मसला लग गया. लिमिट्स इनपुट करते हुए हमने क्या किया है? 10.4. Let me just check my working again. Calculator पे क्या डाला है? 10.4 into 27.04 whole raised to power 0.5. Subtract from this 27.04. We have 10.4 into 2 minus 4.
अच्छा सेकंड मैंने गलत लिख दिया यहाँ पे, दिस इज 84/5। ओके सॉरी, ये जो सेकंड आपके पास क्या आता है 84/5। ओके लेट्स सी व्हाट दिस गिव्स अस नाउ, 676 divided by 25 minus 84 divided by 5, and that's going to be 10.24. ये आप टोटल डिस्टेंस निकाल लें, दोनों को ऐड कर लें, and that's going to give you the result 2.56 plus 10.24, दोनों को ऐड कर लें तो आपके पास क्या आ जाता है 12.8, and that's your final answer here. This is the total distance that we were looking for. That's the final result. Okay, and that completes these 3 difficult questions from this paper as well. In fact, the last 2 were difficult, but decided to say. Okay, I hope you guys all do well in the exam. Make sure that you manage your time well. Management is extremely important. M1 के papers recently वैसे मुश्किल आ रहे हैं, थोड़े से लंबे आ रहे हैं और एक दो क्वेश्चन आपको मुश्किल भी होते हैं. The trick is that you cannot get stuck at the tricky part in the middle of the exam. Tricky question में दरमियान में आप फंस गए तो वो मसला है. बाकी threshold will take care of everything. Okay. Allah Ta'ala will take care of everything, but the rest will be taken care of threshold as well. Okay. तो आपने क्या करना है? Stuck नहीं होना किसी क्वेश्चन के ऊपर. If you can't figure something out in 2-3 minutes, आपको डायरेक्शन नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा क्या है, move on. Complete the rest of the paper, come back to that question at the end. दरमियान में कोई मुश्किल क्वेश्चन पेपर के दरमियान में लेके उस पे फंस नहीं जाना. If you take care of that and you're well prepared, you should be good to go inshallah. कोई मसला नहीं होना चाहिए. Okay. अच्छा, so I hope that makes sense. जी सर. अच्छा, let me go back to that now. आप मुझे कौन सा कह रहे हैं? November 21, paper 4-2. November 21. Where is that? Okay, so that was actually the very first paper that I did in my session, right, last year. Question number 7. Yeah. जी बताएं. Can you be more specific with your question? इसमें कहाँ पे आपको इशू आया था? Okay. February 23. अच्छा मैंने गलत पढ़ा उसको. Okay, sorry about that. February 23 आप कह रहे हैं. That is here. Is this what you're talking about? जी, can you be specific about the question? इसमें क्या मसला है? C part. So let me have a look at the question again. It's a smooth track. It's going like this. Straight track here. Q fans. Collision is this. TLP person नीचे आ रहा है. Okay, ठीक है. When Q reaches C, it has a particle R. Okay. Distance from B at which P collides with the combined particle. ये आपने find करना है. Yes. What question do you have exactly? It's very similar to a question that I just did in the other paper before paper 4-2. इसी November 2022 का. आपको पहले तो figure out करना है कि दूसरे पार्टिकल ने कितना ट्रैवल कर लिया हुआ था उतने टाइम के अंदर. So let me actually just go through this again. From B distance find करना which P collides with the combined particle. यहाँ पे मैंने कहीं पे किया होगा. I'll have to read the question again to remember what the situation was exactly. P was coming down here, colliding with Q. ये सब कुछ हमने कर लिया हुआ है. Rest से release किया था. P collides with Q, which is at rest. Speed of P is this. Okay, ठीक है.
उसके बाद क्यू आगे आ गया, उसके बाद आपके पास क्या है, क्यू रीचेस आर, सी, सी पे क्या है, एक पार्टिकल आर पड़ा हुआ है, इट कोलाइड्स विद दैट which is at rest C, the two particles coalesce और फिर ये combined particle comes to instantaneous test at F, अच्छा ऊपर जाके वो रेस्ट पे आ जाता है, now it passes through C, through okay, distance CF, we figured that out, that was 0.4 meters. Find the distance from B at which P collides with the combined particle. Okay, अच्छा देखें, अब एक आपके पास सबसे पहले क्या हुआ, पार्टिकल P और Q की कोलिजन हुई थी, पार्टिकल P एंड Q दे कोलाइडेड एट द पॉइंट P, B, यहाँ पे इन दोनों पार्टिकल्स की कोलिजन हुई थी पॉइंट B के ऊपर, ठीक है। अब उस कोलिजन के बाद P was moving to the right and Q was also moving to the right. However, Q was moving at a greater speed. ये आपने कहीं पे यहाँ पे फाइंड की होगी, after collision 10 meters per second, Q was moving at 10 meters per second and P was moving at some speed as well. Let's see if we have that somewhere here. Yeah, P की स्पीड 4 meters per second है, ठीक है। अब देखें, Q आगे चला गया, उसकी स्पीड ज्यादा थी, उसने वो जाके C, उसने जाके कोलाइड किया, ये थर्ड पार्टिकल यहाँ पे जो भी पड़ा हुआ था, और उससे उसने जाके कोलाइड किया। अब P उसके साथ साथ पीछे मूव करता आ रहा है, P भी साथ साथ मूव करता आ रहा है, लेकिन वो कम स्पीड पे आ रहा है। अब B से C पे पहुंचने में Q को कितना टाइम लगा, इट्स 7 meters, राइट, एंड द स्पीड इज 10 meters per second, तो कितना टाइम लगेगा, 7 seconds, ये हमने कहीं पे यहाँ पे फाइंड किया होगा शायद, 7 seconds को टाइम लगा, 0.7 seconds, सॉरी, 7/10, दैट्स 0.7 seconds टाइम लगा Q को उससे कोलाइड करने में। अब इतने टाइम में P ने भी तो कुछ ट्रैवल कर लिया ना, P कितना ट्रैवल कर चुका है इतना टाइम में, ऑलरेडी 4 इसकी स्पीड है, 0.7 seconds उसका टाइम लग रहा है, तो उसने यहाँ पे कुछ डिस्टेंस ऑलरेडी ट्रैवल कर लिया होगा, और हमें यहाँ पे कहीं लिखा होगा, अच्छा उसमें इकट्ठा किया हुआ है वहां पे, तो एक तो 2.8 मीटर्स तब तक ट्रैवल हो गया हुआ है जब दूसरे दोनों पार्टिकल्स कोलाइड करते हैं, ठीक है, जब ये दोनों पार्टिकल्स यहाँ पे सी पे कोलाइड करते हैं। अब उसके बाद क्या हो रहा है, सी ऊपर जा रहा है, फिर वापस आ रहा है, सी ऊपर जा रहा है और फिर वापस नीचे आ रहा है, ठीक है। तो अब हमें देखना है, सी एफ पे जाता है और फिर एफ से वापस सी पे आता है, इसको कितना टाइम लगता है, हाउ डू यू फिगर दिस आउट, दिस प्लेन इज स्मूथ, तो आपकी एक्सेलरेशन क्या होती है स्मूथ प्लेन पे, एक्सेलरेशन इज 10 sin थीटा, ठीक है। तो ये आपकी एक्सेलरेशन है, ऊपर को जा रहा था ना पार्टिकल, तो मैंने यहाँ पे क्या किया हुआ है, मैंने यहाँ पे ये किया हुआ है कि क्योंकि ऊपर को जा रहा है तो ऊपर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव ली है, जब ऊपर वाली पॉजिटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन क्या होगी, नेगेटिव होगी। डिस्प्लेसमेंट पूरी जर्नी की देखें, वो सी से एफ पे जा रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, सी स्टार्ट किया था फिर एफ पे गया, ऊपर गया फिर वापस नीचे आया, डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, ओवरऑल 0 होगी, ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ गया ना, तो एस की वैल्यू 0 होगी वहां पे। इनिशियली वेलोसिटी में पता है उसकी क्या थी, 0, पॉइंट सी के ऊपर कंबाइंड पार्टिकल की, राइट। इसको यूज करके हमने क्या किया, सी से एफ और फिर एफ से वापस सी, इसका टाइम निकाल लिया, दिस टाइम टर्न्ड आउट टू बी 0.8 सेकंड, ठीक है। ये आपका और टाइम हो गया, ऐड हो गया उसके अंदर, जिसमें अब पार्टिकल पी जो है वो चलता आ रहा है, 0.7 सेकंड्स पहले हो गए थे और 0.8 सेकंड्स अब और हो गए हैं, तो टोटल कितना टाइम हो गया है अभी तक, जब तक वो पार्टिकल आर वापस आया है पॉइंट सी के ऊपर, अब तक कितना टाइम गुजर चुका है ए को चले हुए पॉइंट बी से, 1.5 सेकंड, 1.5 सेकंड इसको हो गए हैं, ओके, 1.5 सेकंड हो गए। अब जब 1.5 सेकंड हो गए हैं तो इतने टाइम में उसने कितना ट्रैवल कर लिया है, इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया हुआ है, हमने ये किया था, P की स्पीड 4, 1.5 सेकंड से मल्टीप्लाई की, 6 मीटर डिस्टेंस आ गया P का बिफोर एनी कोलिजन हैपेंड, राइट। अब टोटल डिस्टेंस कितना था,
बिटवीन दोज 2 पॉइंट्स बी एंड सी टोटल डिस्टेंस ऊपर दिया हुआ था 7 मीटर्स। अब हुआ ये है कि जो पार्टिकल पी है वो ऑलरेडी यहाँ पे पहुंच गया है, और जो कंबाइंड पार्टिकल है उसका हमने कोई नाम तो नहीं दिया यहाँ पे, कंबाइंड पार्टिकल व्हाटएवर दैट इज, लेट्स कॉल दैट पार्टिकल, या उसने आर दिया हुआ नाम, या फिर उसको हम एस नाम देते हैं। ये कंबाइंड पार्टिकल है, इनके दरम्यान में डिस्टेंस और कितना है क्या, 1 मीटर। अब आपने देखना है ये 1 मीटर डिस्टेंस जो है ये कैसे कवर होएगा। ठीक है, 1 मीटर डिस्टेंस जो है ये कैसे कवर होएगा। अब पी की स्पीड राइट साइड पे 4 मीटर पर सेकेंड है, क्यू की स्पीड जो पार्टिकल कंबाइंड पार्टिकल है इसकी स्पीड लेफ्ट साइड पे 2 मीटर पर सेकेंड है। तो इनकी रिलेटिव स्पीड एक दूसरे के साथ क्या होगी, दोनों एक दूसरे के करीब किस स्पीड पर आ रहे हैं, 6 मीटर पर सेकेंड की स्पीड पर आ रहे हैं एक दूसरे की तरफ, राइट। तो 1 आपका डिस्टेंस है और 6 आपकी रिलेटिव वेलोसिटी है उनकी, 1/6 से आपके पास क्या आएगा, ये टाइम आ जाएगा। ठीक है, अब ये वो टाइम है जो आपको एडिशनल लगा है until this collision happens। अब उसने फाइंड करने के लिए क्या कहा हुआ था, डिस्टेंस फ्रॉम बी एट विच पी कोलाइड्स विद द कंबाइंड पार्टिकल। अब ये एडिशनल टाइम और है, इतने टाइम में पी ने और कितना ट्रैवल कर लिया है, स्पीड इनटू टाइम, दैट्स 2/3। तो 6 मीटर उसने पहले ट्रैवल किया हुआ था, वो पहले इस पॉइंट पे पहुंचा हुआ था। ओके, और फिर उसने क्या किया, उसने 2/3 और ट्रैवल कर लिया, तो 6 और 2/3 को आपने ऐड कर लिया, 6.67 आ गया। ओके, आई होप दैट मेक्स सेंस। इट डिड नॉट हैव मेड सेंस टू अदर्स अगर उन्होंने क्वेश्चन अभी रिसेंटली नहीं देखा, बट वो साथ इट मेक्स सम मोर सेंस ना, अगर आपने अभी रिसेंटली ये क्वेश्चन देखा है तो आपको होपफुली बैकग्राउंड इसका याद होएगा। दिस इज हाउ यू वुड अप्रोच दिस। इसमें कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चन मुझे बताएं। मोमेंट या ऑफ कोर्स मोमेंटम आएगा, सारे टॉपिक्स आएंगे तो उसमें तो ऐसा कुछ नहीं है। सी पार्ट डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व नहीं कर सकते डायरेक्टली। आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज इनपुट करनी है, फॉर्मूला में वैल्यूज इनपुट कर दें, उसके बाद फिर आप जो मर्जी करें, फॉर्मूला में वैल्यूज इनपुट करके आप डायरेक्टली आंसर लिख दें, दैट्स ओके। लेकिन क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में वैल्यूज इनपुट नहीं करेंगे, डायरेक्टली आंसर लिखेंगे उसके बगैर, तो फिर आपके मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, यू नॉट गोना डू दैट। 4/1 November 2022 6B 4/1 November 2022 कौन सा क्वेश्चन है, क्वेश्चन 6। अच्छा सॉरी, these are two different people। 6, हाँ आप वही बात करें। 4/1 इसमें क्या है, ओके ठीक है, आई गेट व्हाट यू मीन। देखें, वी आर टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट सिस्टम। पूरे सिस्टम को अगर आप देखें, देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन दैट सिस्टम। 6B की बात करें है ना, अगर आप पूरे सिस्टम को देखें, पूरे सिस्टम के ऊपर देयर इज नो एक्सटर्नल फोर्स। टेंशन तो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर रही है ना, ए को ऊपर की तरफ खींच रही है, बी को लेफ्ट की तरफ खींच रही है, सो दैट सॉर्ट ऑफ कैंसिल्स ईच अदर आउट। तो उसका ओवरऑल इम्पैक्ट उस सिस्टम के ऊपर नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स कोई भी नहीं है इसके अंदर। तो आप पूरे सिस्टम को इकट्ठा देख रहे हो, राइट, आप ए और बी दोनों की टोटल एनर्जी देख रहे हो, तो टोटल एनर्जी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं होगा उस टेंशन का, बिकॉज वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो रही है। टेंशन ए के ऊपर एक साइड पे लग रही है, बी के ऊपर दूसरी साइड पे लग रही है। तो ड्राइविंग फोर्स होती है जो पूरे सिस्टम के ऊपर एक एक्सटर्नल फोर्स लगती है, राइट। सो दैट्स व्हाई वी कैन यूज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देयर। अच्छा, और क्या था, टेंशन, अच्छा ये हो गया। 6 where does 0.18 come from? 0.18 यहाँ पे कहाँ लिखा हुआ है, 0.18 4/1 November 2022 6। अच्छा, आप किसी और पेपर की बात कर रहे हैं, अच्छा आप उसी पेपर की बात कर रहे हैं। अच्छा
Question number 6. इसमें 0.18. So I'm not sure which question you're talking about. Euphoria. .18 मुझे नजर नहीं आ रहा कहीं पे इधर. 4.2. Yeah, this is 4.2, November 2022. Question 6, part A. Okay. इसमें 0.18 किधर आ रहा है? आप मेरी वर्किंग की बात करें या मार्किंग स्कीम आपने कुछ देखा है? 0.18 यहाँ शायद इसका लिखा हो, 0.3 into 0.6. ये 0.18 बनता है. ये आपने शायद देखा वहां पे. Final answer में कहाँ पे है? Are you talking about my working here or something that you've seen in the marking scheme? 0.18 शायद उन्होंने 0.3 और 0.6 को मल्टीप्लाई करके 0.18 लिखा हो वहां पे. शायद वहां से आ रहा हो. ठीक है. If there are no other questions, that's it. I wish you all the best. Give your best to relax. Yeah, okay, it's okay. Time management बस सही करें, inshallah you'll do well, as long as you have made the effort. किसी question पे stuck नहीं होना, panic नहीं होना. It's okay. If you are finding something difficult, most of the other people are going to be finding that difficult as well, as long as of course you are well prepared. आपको कुछ मुश्किल लग रही है तो अब आपकी कोई मुश्किल लग रही होगी. It's okay. There's no need to panic. Threshold takes care of that. As long as you make sure that you don't get stuck at a question and end up missing some questions because of that. बस वो नहीं करना, and you should be good, inshallah. All right. All the best, and I'll see you later for the other papers. Allah Hafiz. What are you doing here 30 minutes before exam? You should be at the center. Anyway, Allah Hafiz.